सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जो है सुपर केमिस्ट्री। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे मैं वीडियो लाया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर दोस्तों, अभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो एक डिपार्टमेंट रहता है, जैसे कि आपको पता रहेगा क्यूसी होगा, क्यूए होगा, प्रोडक्शन होगा, आरए डिपार्टमेंट, जो उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स। तो वो रेगुलेटरी अफेयर्स फार्मा इंडस्ट्री के इसमें क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में कैसे कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब क्वेश्चन रहेगा, और आपको इस वीडियो में रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में पता चलेगा कि उसका मेन फंक्शन क्या रहता है, वर्किंग क्या रहता है, उसके इसमें क्या क्या रहते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं तो करो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो कि ताकि उन्हें भी पता चले कि रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में कि क्या क्या मोस्टली इम्पोर्टेंट रहते हैं फार्मा इंडस्ट्री के इसमें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो में। तो देखो देखो दोस्तों, पर सबसे पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछते हैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स ये होता है इन फार्मास्यूटिकल में, इंडस्ट्री इज अ प्रोफेशन विच एक्ट एज अ इंटरफेरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। देखो दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जिसमें वो टाइप होता है अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू ड्रग प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट कंट्रीज प्राइवेट टू देयर मार्केटिंग। देखो, वो जो एक बताए, इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू ड्रग। जो भी न्यू ड्रग होता है उसके जो रजिस्ट्रेशन कर रहते हैं वो रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ओके, तो ये डिपार्टमेंट ये काम करता है कि जैसे कि क्यूसी वाले टेस्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट के वाले उस पर देखते हैं सब ओके है कि नहीं। तो ये रेगुलेटरी अफेयर्स का ये काम रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में, सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर्स आर ए प्रोफेशनल। तो इसमें मेन गोल क्या है, आर ए के इसमें क्या रहता है। सबसे पहला, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ। सेकेंड, ensuring safety, efficacy and quality of drugs. Third, ensuring appropriateness and accuracy of product information. तो ये सब आर ए का मेन गोल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज एन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। उसको हम बोलते हैं IND, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग, उसका फुल फॉर्म। इट इज एप्लीकेशन विच इज फिल्ड विथ FDA टू गेट अप्रूवल for legally testing an experimental drug on human subject in the USA. So this is the application of industrial investigation of new drug. Okay. Next, what is the new drug application? उसको हम बोलते हैं NDA. NDA full form न्यू ड्रग एप्लीकेशन। द न्यू ड्रग application, yeah, NDA is a vehicle through which drug sponsor formally propose to that the FDA approve a new pharmaceutical for a sale and marketing in the US. The data gathered during the animal studies and human clinical trials of an investigational new drug become part of a NDA. In simple word, it is an application which is filled with FDA to market a new pharmaceutical for sale in USA. So this is the new application of new drug application, that is इसको बोलते हैं हम NDA. नेक्स्ट स्लाइड में, what are the chemical classification code for अरे सो ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन कोड रहता है, जैसे कि न्यू मॉलिकुलर एंटिटी होता है, न्यू स्टर्म, न्यू सॉल्ट और अदर नॉन कोवलेंट डेरिवेटिव, न्यू फॉर्मुलेशन होगा, न्यू कॉम्बिनेशन होगा, न्यू मैन्युफैक्चर, न्यू इंडिकेशन, ड्रग ऑलरेडी मार्केटेड बट विदाउट एन अप्रूव्ड NDA, OTC। OTC को बोलते हैं ओवर द काउंटर स्विच। सो ये सब केमिकल क्लासिफिकेशन कोड रहते हैं, तो हम देखा है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज एन एब्रिविएटिव ऑफ न्यू ड्रग। उसको जो AND का जो एब्रिविएशन रहता है, क्या रहता है। इट इज एप्लीकेशन फिल्ड विथ FDA फॉर ए US जेनेरिक ड्रग अप्रूव फॉर एन एक्सिस्टिंग लाइसेंस मेडिकेशन और अप्रूव्ड ड्रग। इन सिंपल वर्ड, इट इज एन एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ जेनेरिक ड्रग्स।
जो भी जेनेरिक ड्रग्स रहते हैं उसका जो अप्रूवल जो रहता है उसको हम बोलते हैं एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ANDA. So what is generic drug product? A generic drug product is the one of that comparable to an innovator drug product in a dosage form, strength, route of administration, quality, performance, characteristic and intended use. तो ये है जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. सो व्हाट इज DMFs? काफ़ी बार पूछा जाता है कि DMF क्या बोलते हैं. DMF बोलते हैं हम लोग इन RA में ड्रग मास्टर फाइल. तो ड्रग मास्टर फाइल ये क्या होता है? इट इज़ अ सबमिशन टू द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट may be used to provide and confidential detailed information about facility, process, article used in manufacturing, processing, packaging, storing one or more human drugs. तो ड्रग मास्टर फाइल क्या होता है कि ये जो इट प्रोवाइड जो रेगुलेटरी ऑफिस जो रहता है वो प्रोवाइड करता है FDA को डिटेल में कि फाइल केस में कि उनके पास फैसिलिटीज़ क्या क्या है, प्रोसेसेस क्या है, इक्विपमेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है. दे ऑल द रिपोर्ट दे मेक एंड दे सबमिटेड टू द FDA. ओके, सो इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग DMF. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है? इट इज सबमिटेड टू FDA टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. First. Second, its submission is not required by a law or regulation. इसमें law और regulation कुछ भी require नहीं होता. It's neither approved nor disapproved. Approve भी नहीं होता और disapprove भी नहीं. It's filled with FDA to support NDA, IND, ANDA, another DMF or amendments and supplements to any of these. It's provided for the 21 CFR Code of Federal. इसको हम बोलते हैं Code of Federal Regulation 314, 420. Okay, it is not required when applicant reference its own information. Okay, so these are the important facts regarding the DMF, that is को बोलते हैं हम ड्रग मास्टर फाइल. नेक्स्ट, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ DMF? तो कैसे कैसे टाइप्स होते हैं? जब सबसे पहले जो रहता है मैन्युफैक्चरिंग साइट होता है, फैसिलिटी, ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पर्सनल नो लॉन्गर एक्सेप्टेड बाय FDA. टाइप 1 में. टाइप 2 में क्या होता है? ड्रग सब्सटेंस इंटरमीडिएट एंड मटेरियल यूज इन देयर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट. टाइप 3 में होता है पैकेजिंग मटेरियल. टाइप 4 में होता है एक्सिपेंट, कलरेंट, फ्लेवर, एसेंस और मटेरियल यूज इन देयर प्रिपरेशन. टाइप 5 में होता है FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन, FDA डिस्करेज इट यूज. जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ DMF. ओके, ये सब टाइप है. टाइप 5. Okay, next slide. What are the example of the changes to approve drug production in which 505(b)(2) applications will be submitted? मतलब क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं ड्रग को अप्रूव करने के लिए? तो चेंज इन डोजेस फॉर्म, चेंज इन सबसे पहला चेंज इन डोजेस फॉर्म. सेकेंड, चेंज इन स्ट्रेंथ, change in route of administration, substitution of an active ingredient in the formulation product, change in formulation, change in dosing regimen, change in active ingredients, new combination product, new indication, change from prescriptions indication to OTC indication, naturally derived or recombined active ingredients bioequivalence. So these are the examples to change to approve a drug. So these are the changes. Okay, now in next slide. व्हाट इज मार्केटिंग ऑथराइजेशन ऑफ एप्लीकेशन? उसको हम बोलते हैं मा. उसका जो फुल फॉर्म है मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन. इट इज एन एप्लीकेशन टू फिल विद द रिलेवेंट अथॉरिटी इन द यूरोप, टिपिकली द UK, MRA और द EMF कमिटमेंट फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन यूज, CHMP. इसको हम बोलते हैं ह्यूमन यूज के लिए. टू मार्केट द ड्रग or medicine as per the UK MHRA, Medicinal Healthcare or Regulatory Authorities. Application for the new active substances are described as full application. Application for medicine containing existing active substances are described as abbreviated 0 or an abbreviated application. So these are the marketing application. इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका जो फुल फॉर्म होता है मार्केटिंग एप्लीकेशन ऑथराइजेशन एप्लीकेशन. ओके, नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट इज एन ASMF?
एक्टिव सब्सटेंसेस मास्टर फाइल, इसको हम बोलते हैं ASMF, इसको बोलते हैं एक्टिव सब्सटेंसेस मास्टर फाइल. इट इज़ अ सबमिशन विच ड्यू टू EMF, EMA, MHRA or any other drug regulatory authority in Europe to provide confidential intellectual property or known how to the manufacturer of the active substances. In simple one, it is a submission made by the European Drug Regulatory Agency of the confidential information of active substances or active pharmaceutical ingredients API. ओके, सो दिस इज द ASMF, इसको हम बोलते हैं एक्टिव सब्सटेंसेस मास्टर फाइल. ओके, प्रीवियसली हमने देखा था DMF, देखा था ड्रग मास्टर फाइल. इसमें ही व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एक्टिव सब्सटेंसेस ऑफ फॉर विच ASMF इज आर सबमिटेड. तो क्या क्या टाइप्स है. न्यू एक्टिव सब्सटेंसेस, एग्जिस्टिंग एक्टिव सब्सटेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोप एज एन फार्माकोपिया PH यूरो, उसको बोलते हैं, और द फार्माकोपिया ऑफ एन EU मेंबर स्टेट. फार्माकोपियल एक्टिव substances included in the PH European or in the pharmacopoeia as a new member state. Okay, now in next slide, what are the ICS guidelines to refer for the preparation of registration, dossier, application of medicine with respect to the format and content of each model. तो क्या कौन सा गाइडलाइंस है जो ICS के गाइडलाइंस है फॉर द डोजियर एप्लीकेशन के लिए. तो है सबसे पहला है M4 गाइडलाइन, सेकेंड है M4Q, थर्ड है M4S गाइडलाइन, और फोर्थ है M4E गाइडलाइन. सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट देयर इन ICS गाइडलाइन फॉर द डोजियर एप्लीकेशन. ओके, व्हाट इज CTD? इट इज़ अ कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट. CTD को बोलते हैं हम कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स. इट इज़ अ सेट ऑफ अ स्पेसिफिक फॉर द एप्लीकेशन डोजियर for the registration of medicines and designated to be used across Europe, Japan and United States of quality. Safety and efficiency information is assembled in a common format throughout the CTD. The CTD is maintained by the International Conference or Harmonization of Technical Requirement for the Registration of Pharmaceutical for Human Use (ICH). CTD format for submission new drug registration application dossier is widely accepted by the regulatory authorities of the other countries too, like Canada, Australia, etc. Okay. So what are the modules of CTD? अभी CTD में मॉड्यूल्स क्या क्या होता है. जैसे कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट डिवाइडेड इनटू 5 मॉड्यूल. मॉड्यूल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन. मॉडल 2 में कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट समरीज ओवरव्यू करेगा, समरीज ऑफ मॉडल 3 to 5. ओके, जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होगा उस समरीज को ओवरव्यू करेगा. ओके, मॉडल 3 में रहता है उसका क्वालिटी रहेगा. मॉडल 4 में रहेगा उसका नॉन क्लिनिकल स्टडीज रिपोर्ट्स, टॉक्सिकली स्टडीज, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक है क्या, टॉक्सिकली है क्या, उसके बारे में स्टडी रहता है. मॉडल 5 रहेगा क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट एज पर द क्लिनिकल स्टडीज. व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग इन EU. मतलब EU की इसमें कौन सा प्रोसीजर रहता है जो अप्रूव करता है ड्रग के लिए. सेंट्रलाइज प्रोसीजर, इसको हम लोग बोलते हैं CP शॉर्ट फॉर्म में. डिसेंट्रलाइज प्रोसीजर, इसको बोलते हैं DCP. म्यूचुअल रिकग्निशन प्रोसीजर, इसको हम बोलते हैं MRP. नेशनल प्रोसीजर, इसको हम बोलते हैं MP. व्हाट इज CEP? This is the certificate which is used to certification of substances division of European decorated for the quality medicine EDQM. When the manufacturer of a substances provides proof that the quality of the substances is suitable, controlled by the relevant monographs of European Pharmacopoeia. Okay, so this is CEP. What is a dossier in regulatory affair? अभी डोजियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा जाता है रेगुलेटरी केस में. रेगुलेटरी डोजियर मीन्स ऑल द रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड फिलिंग्स रजिस्टर विद अ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अ मार्केटिंग ऑथराइजेशन कंटेनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ्टी इफिशिएंसी. मतलब वो सेफ्टी होना चाहिए बॉडी को, इफिशिएंसी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, नॉन क्लिनिकल डाटा, CMC डेटा, ड्रग प्रोडक्ट एज इट मे चेंजेस टू टाइम. So this is a dossier in regulatory affairs. Okay, next, what is dossier preparation? तो dossier preparation कैसे बोलते हैं. Abstract dossiers, it is a collection of documents of the particular subject
any preparation of pharmaceutical product or for a human use to go through the process of reviewing, assessing the dossier of pharmaceutical product which contains details information about administrative quality and non-clinical and clinical data. What are the regulatory guidelines? So regulatory guidelines क्या क्या होते हैं? Regulatory guideline requirements means all the applicable law, rules, regulation, order, requirements. रेगुलेटरी गाइडलाइन आपको पता है, जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइन रहता है उसका जो भी फुलफिल होता है रूल्स एंड लॉ एंड एप्लीकेबल उसको फुलफिल करना चाहिए. गाइडलाइंस इंटरप्रेशन डायरेक्टिविटीज एंड रिक्वेस्ट वेदर और नॉट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ and from and off and plan of memorandum agreements with any regulatory authorities. So this is the regulatory guidelines in regulatory affairs. Okay, next, what needs FDA approval? मतलब FDA को अप्रूवल के लिए क्या क्या चाहिए? The product which need FDA approval ह्यूमन पे रहता है, एनिमल ड्रग्स पे रहता है, मेडिकल बायोलॉजिकल पे रहता है, मेडिकल डिवाइस पे रहता है, फूड पे रहता है, टोबैको प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट आर द इमिट रेडिएशन. सो दिस ऑल द FDA नीड्स द अप्रूवल. जो भी हमने देखा है कि जैसे मेडिकल बायोलॉजिकल होगा इस पर FDA अप्रूवल चाहिए, मेडिकल डिवाइस उस पर, जो फूड रहता है एनिमल का फूड इंक्लूडिंग कौन सा भी फूड उसको FDA चाहिए, टोबैको जो रहता है उसमें भी, कॉस्मेटिक में भी, इलेक्ट्रॉनिक. सो दिस ऑल द रिक्वायर्ड फॉर FDA अप्रूवल. ओके, what are the four stages of the drug development? Phase 1, discovery and development. Phase 2, preclinic research. Phase 3, clinical research. Phase 4, FDA review. 5, FDA post market and safety monitoring. So these are the four stages of drug development. Okay, what is CMC in regulatory affairs? Chemistry, manufacturing and control. CMC को बोलते हैं chemistry, manufacturing and controls. CMC regulatory affairs RA is a specified area within the RA that has the ultimate responsibility for the providing CMC regulatory leadership and trajectory required for to achieve regulatory approvals. Okay, what is CTD format? A common technical document is a set of classification and application of dossier for the registration of medicine and designed to be used to across Europe, Japan and United States. Quality of pharmaceutical documentation. What is a dossier prepared in pharmaceutical product? Abstract dossier. It is a collection of documents of the particular subject of any preparation or pharmaceutical product for human use. Go through the process reviewing and assessing the dossier pharmaceutical product, which contained a detailed information about the administrative quality and non-clinical clinical data. Okay. सो व्हाट इज FDA CFR? इसको बोलते हैं हम सेंट्रल कोड ऑफ रेगुलेशन. ओके, सो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन CFR, codification of the general and permit rules published the federal registered by the executive departments and agency of the federal government. The title 21 of the CFR reserve for the rules of the FDA, that is को बोलते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, व्हाट आर द CGMP? उसको हम बोलते हैं करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. गाइडलाइंस क्या कहते हैं? द CGMP रेगुलेशन फॉर द ड्रग कंटेनिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द मेथड, फैसिलिटीज, कंट्रोल्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकेजिंग of drug product in the regulation of make sure that the product is safe and used that it is ingredient extent it claims to have. So these are the CGMP guidelines in the RA. Okay, so बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में. अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और आपके फ्रेंड्स में भी ये जो वीडियो है वो सेंड करो, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि जो RA डिपार्टमेंट है कितना इम्पोर्टेंट होता है फार्मास्यूटिकल्स में. जो न्यू डोजियर रहता है, न्यू ड्रग होता है, वो डेवलपमेंट होता है, अप्रूवल लेने के लिए ये डिपार्टमेंट काम करता है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.